even if you get AIR1, you might not get your home state as your allocated cadre, and there are simple reasons for this. मतलब ये सिविल सर्विसेज एग्जाम की जब हम तैयारी कर रहे होते हैं कोई नहीं बताता है, तब तो सब सपने देख रहे होते हैं कि अपने स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्ट में मैं DM बन के आऊँगा XYZ, but the cadre policy is such that it makes it difficult to do so. So there are a couple of reasons for this, and we'll discuss that in today's video. First and foremost, you need to understand कि भाई India overall states and UTs are divided into zones, right? So आपका zone 1 जो है, this is your northern zone. यहाँ पे आपका सारी UTs, because one of the cadres in the north zone is Agmut, right? Agmut हमारा क्या है? अरुणाचल, गोवा, मिजोरम एंड ऑल यूटीज. ऑल यूटीज माने दिल्ली भी इसी में आएगा, आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एंड देन योर पौंडीचेरी एंड Daman and Diu, Dadra, Nagar Haveli, all UTs, Chandigarh, everything will come under Agmut cadre, right? So Agmut is obviously उसके अलावा गोवा, मिजोरम and Arunachal. तो all of these are part of your zone 1. Zone 2 हमारा आता है which is sort of the central zone. इसमें यूपी, बिहार, झारखंड and उड़ीसा. Zone 3 में हमारा western zone, गुजरात, महाराष्ट्र, MP and छत्तीसगढ़. Now zone 4 is our northeast zone. यहाँ पे हमारे 6 states आते हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय is a single cadre. मतलब so far as IAS and IPS का cadres are concerned, Assam and Meghalaya are a single cadre. And then you have Nagaland, Manipur and Tripura. तो ये हमारे 5 zones हैं. Fourth zone and then fifth zone. Fifth zone is obviously your southern states, Telangana, AP, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Now, there are 2 ways in which you have to give preferences. And number 1, you have to give preference for a zone. And second, you have to give preference for a cadre. Now, zone ka preference is a lot of the times based on the home state. Like for example, अगर इसका एक example ले, तो this is a DAF 2 of Aditya Srivastava, AIR1 2023 में. तो this is what his state preferences, cadre preferences look like. अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला आप देखोगे whether you want to consider your home state उत्तर प्रदेश as your first cadre preference, yes or no, that's it. अगर आपने इसको yes भरा है तो automatically zone 2 जहाँ पे उत्तर प्रदेश है, zone 2 will become zone का preference 1 and within that उत्तर प्रदेश will become state preference 1, right? If you fill no over here कि मुझे अपना उत्तर प्रदेश जो होम स्टेट है नहीं चाहिए, I don't want that as my first preference, then you will not be allocated your home cadre in any circumstance, be it through cadre marriage, this, that, XYZ, कुछ करके नहीं मिलेगा, right? So you have to be very careful about this. Now there are reasons that people say no to this and उसके बारे में भी बात करेंगे, but the core idea is ये हमारा determine कर रहा है इस preference को, and within the states I now have to prefer. तो generally क्या रहता है, zone 1 अब इनका यहाँ से हो गया, इसके बाद he has preferred Bihar, then Odisha and then Jharkhand. Second zone he has preferred for here. तो अब होगा क्या, the cadres will cycle, माने कि it will go from first preference zone का state 1 to second preference zone का state 1 to third preference का state 1, fourth preference का state 1, fifth preference का state 1. तो these are the first 5 cadres that he will be cycling through. राइट, अगर इन पे हम नंबर लिखें तो दिस विल बी हिज फर्स्ट cadre प्रेफरेंस, सेकंड cadre प्रेफरेंस, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. तो इसी तरीके से ही विल बी साइकिलिंग थ्रू ऑल द जोन्स ऑफ इंडिया. क्योंकि पहले क्या होता था दैट अ नंबर ऑफ पीपल वुड बी लाइक कि भाई आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड ऑफ द लेट्स से नॉर्थ जोन व्हिच इज माय कंफर्ट जोन. But government of India said कि for civil servants, IAS and IPS officers, we want good qualified people to serve all across the country. So therefore, this cadre policy came about, I think, in 2017-18. So that was the first time that this came about. And अब इसमें इस तरीके से घूमने के कारण बहुत सारे complication बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि zone and cadre preferences you have given, but on top of that, whether you get allocated your preferred cadre will also depend on the vacancies that are coming up. Vacancies every year इस तरीके की कुछ दिखाई देती है. So these are the vacancies as on 21st of May 2025. माने कि CSE 2024 के जो लोग थे who secured rank last year, उनके लिए for IAS
These are the vacancies. अब ये vacancies, if they are not visible to you, I'll try and magnify, but this is what it looks like. कि एगमोट में टोटल वैकेंसीज इतनी है, अनरिजर्व्ड इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस, देन ओबीसी, देन एससी एंड एसटी. अब इसके साथ भी क्या है, लेट्स से टोटल वैकेंसीज आर 26 फॉर एगमोट कैडर, of which 9 are insider and 17 are outsider. So this is the reason why I was talking about कि somebody might choose कि मुझे अपना होम स्टेट नहीं लेना. Because for example, let's take a look at Haryana. Right, तो हरियाणा इज अ relatively smaller state when it comes to these things. हरियाणा में अब इतनी वैकेंसीज नहीं आती है, बट हरियाणा इज कंसिडर्ड अ गुड स्टेट, अ गुड कार्डर. वाई? बिकॉज कहीं पे भी आप हरियाणा में पोस्टेड हो, यू आर नॉट टू फार अवे फ्रॉम अ मेजर सिटी. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पोस्टेड इन हिसार, सिरसा, इवन देन मतलब चंडीगढ़ आपके पास है. इफ यू पोस्टेड इन महेंद्रगढ़, दिल्ली, गुड़गांव आपके पास है. तो होता क्या है ना कि once you come into service, you also have to realize that you will then start a life, you will have a family, your kids will probably go to school. तो आपका बच्चा अब मतलब आप अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो जहाँ पे आपको लगता है कि they don't have good enough schools, so then you'll probably want to send your kid to some school which is slightly far away. तो अब फिर वो डिस्टेंस ट्रैवल क्यों, क्या, कैसे, a number of these factors come into play, क्योंकि naturally you will want to give the best education possible to your kids, and you're going to be in service for the next 35 years, 30 to 35 years. So a lot of people choose Haryana, but Haryana में क्या रहता है, outsider vacancy ज़्यादा है insider से. तो a number of people will be like कि भाई Haryana is not my, I'm not choosing Haryana as my home cadre in the hopes of कि भाई उनको outsider vacancy यहाँ पे मिल जाए. But अब इसके साथ अगला ये factor आता है कि भाई अब यहाँ पे insider vacancy was one for OBC, outsider vacancy was one for SC, and second insider was for ST. आउटसाइडर 3 आपके पास अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, योर प्रेफरेंसेस एंड योर जोन्स डिटरमाइन वेदर यू विल गेट योर होम कार्डर और नॉट. जनरली हो जाता है, बट अगेन इफ यू आर AIR1 एंड आपके होम स्टेट में आपकी कैटेगरी की इनसाइडर वैकेंसी नहीं है, so then even on rank 1 you might not get your home state. And there you have it. Now this is something that I wanted to talk about because abhi DAF 2 ka डेट चल रही है, एंड नंबर ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड अबाउट कि भाई अच्छा किस स्टेट को कहाँ प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए. For that reason, Shashank sir, who's an expert on these matters, will be conducting a thorough session where he'll be talking about the pros and cons of not just each state, each cadre, each sort of posting. He will also be talking in depth and detail, practical तरीके से कि भाई कौन सी सर्विसेज को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, राइट? बिकॉज अब देखो, सर्विस प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो a lot of people will give a lot of different preferences. These might not be the same preference that you have. So for that reason, if you want to join that session, you can check the link in the description, and there you have it. That's the cadre policy for IAS, IPS and Forest Service, IFS, not Foreign Forest Service, because those are the 3 all India services.